In the last 10 days, not a single day has passed when the world hasn't been left shell-shocked by fresh evidence of what the Hamas actually did inside Israel. It wasn't just about the way people were killed, raped, murdered, mutilated, bodies defiled. Now details have come out about how thermobaric weapons were used, apparently, so that entire families would get incinerated. There were bombs which were thrown inside house so that the whole family would go up in flames as they cowered inside. Nonetheless, even that hasn't worked to open the eyes of some to the unvarnished truth. There are people who continue to blame Israel for genocide since day one of the attack. In fact, now they have gone a step further. Remember, there was such a thing as Holocaust denial. Today, that is impossible simply because of the images of the Hamas's violence that are being broadcast daily, not just on our TV, but have been actively put out by Israel because they are not going to let the world avert its eyes from the reality of what Hamas did. Now even that has become a problem. In a fresh twist of events, now there are certain people in India, like PDP leader Iltija Mufti, who are saying, why is the Indian media so interested in what is happening in Israel? Is this only an effort by the right wing to try and use Israel in order to fuel Islamophobia in India? They remain completely blind to the fact that there have been people in India who not just have expressed support for Palestine, which is legitimate. The Indian government on record has also expressed support for Palestinians' rights to coexist peacefully along with Israel. The issue here is very different. The issue here is calling out the reality of what Hamas is, what Hamas wants, and what Hamas has done, and how there are terror groups in our neighborhood who also have the very same agenda vis-a-vis India. And that is why India is talking about it, India is thinking about it. Is that now going to be dubbed Islamophobia? Let's take this across to the guest joining us now, Guru Prakash, National Spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, Senior Journalist, Huzaifa Amir Rashadi, Outgoing Secretary of Aligarh Muslim University Students' Union, and Advocate Shahid Ali, President of the United Muslim Front. Let me first start by asking you, Mr. Guru Prakash, because this is a very real angst now that I see in India. Why is there so much? In fact, I was reading an Al Jazeera opinion piece saying conflict in Israel, misinformation and propaganda in India. Most of the commentary being done about Israel is in Hindi because the right wing and the BJP in India are weaponizing Israel to spread hatred against Muslims. Why are you doing this? Why are you so interested in what happens in Israel? Mind your own business. No, Padmaja, I think it's very important for us to understand that there is indeed a deep-seated atmosphere, a political atmosphere in India. When you have a leader like Mr. Rahul Gandhi from the Congress party, not a single tweet, not a single press release, not a single statement by any of the official Congress spokesperson condemning the brutal act of Hamas. And what is the reason behind it? Mr. Rahul Gandhi did not get the time. He has the time to do everything, but when Hamas is a declared terrorist organization just for the sake of politics of minority appeasement, तो ये तो होगा ही. I think there is a clear-cut atmosphere. You want to garner a section of votes, you want to appease a section of the population, so you will not take a stand. This is clear-cut case of politics of minority appeasement, Padmaja. This is beyond my comprehension. The principal opposition party of the Congress party, Congress party has just refused to take even the name of Hamas. You were talking about the opinion piece of the Al Jazeera. I was just going through an opinion piece of Wall Street Journal. Now even the international press has started talking about them. There is a global outcry against the brutal atrocities committed by the Hamas terrorists. But you have an office bearer of the Congress party. You have an office bearer, a state secretary of the Congress party, who is on the rolls of the Congress party. He is celebrating Hamas. What is this mindset? So clearly, I think the government of India has portrayed its stand. We are strongly standing against any form of terrorism, especially with respect to Israel.
But look at the Congress party. Look at what the PDP office bearer is saying. So there is definitely a polarized view here. But we have to understand, अगर terrorism की बात होगी, then it has to be the yes or no. But the Congress party's ambivalence speaks a lot. Okay, you spoke about their silence. The PDP is questioning your over-vocalization. Let me actually quote to our viewers exactly what Iltija Mufti said. BJP isn't relying on Article 370 or even Ram Mandir to win 2024 anymore. Godi media deluging us with images depicting Israel as victim and fanning Islamophobia despite India's traditional pro-Palestine stand is part of a bigger plan. There is certainly some method to this madness. Harshvardhan Tripathi. The Modi government has now made a bigger plan and Godi media is fanning it by telecasting what is happening in Israel. पद्मजा, मैं क्या कहूं, लोगों की मूढ़ता के पहाड़ पर बैठे हुए लोग हैं। जब यही मीडिया भारत का, जब यही भारत के लोग और जिन्हें भक्त कहा जाता है, जब वही लोग अफगानिस्तान की जीत पर तालियां बजा रहे थे, स्टेडियम में पूरी तरह से अफगानिस्तान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे थे, तो क्या कर रहे थे? वो इस्लामोफोबिया फैला रहे थे। और मुझे लगता है कि शायद वो बारीक अंतर जो है ना, वो अब इस देश के नेताओं को बिल्कुल भूल गया है कि आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे करनी है, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में कैसे बिहेव करना है। वो लोग सब कुछ भूल गए। और कमाल की बात यह कि वो उस मूल सिद्धांत को भूल गए जो भारत का मूल सिद्धांत है। चाहे हम भारतीय संस्कृति की बात करें, चाहे हम सनातन की बात करें, या 1947 को जो ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ जो देश बना इंडिया भारत, उसकी बात करें, हम टेररिज्म के, आतंकवाद के खिलाफ हैं। फलस्तीन और इजराइल का जो झगड़ा होगा, उनके बॉर्डर इश्यूज होंगे, उसकी बात हम अलग से कर सकते हैं। और क्या कोई भी सरकार, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, कोई और सरकार होती, क्या वो हमास के टेररिस्ट एक्ट को सही ठहरा रही होती? शायद आज कांग्रेस भी पावर में होती तो वो उसको कंडेम करती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज विपक्ष में रहते हुए ये पार्टियां, जो घरेलू राजनीति है और जो विदेश नीति भारत की होनी चाहिए, उन दोनों को ऐसा घालमेल कर दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया है। वहां यहूदी और मुस्लिम लड़ रहे हैं और आतंकवादी हमला हुआ है, वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। रशिया यूक्रेन में भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, लेकिन जब रशिया यूक्रेन का झगड़ा हुआ तो कुछ लोग यूं ही यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, क्योंकि रशिया से भारत तेल खरीदता है। वो तेल भारत के लोगों को ही तो मिलता है ना, इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलता है। और अफगानिस्तान का मैच, ये ऐसे उदाहरण है जो इस देश में इस्लामोफोबिया बताने वाले लोगों को बेनकाब करते हैं। और जो अफगानिस्तान में मारे गए वो कोई मुसलमान नहीं थे तो कोई हिंदू थे क्या? और जब यहाँ के एक मौलाना ने कहा कि नहीं, तालिबान तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तो आपको शर्म से सर झुकना चाहिए था। मुझे लगता है ऐसे ढेर सारे, मतलब जिसको कहते हैं कि हम इतनी बातें कर सकते हैं, लेकिन सबसे बुरा ये लग रहा है कि जब पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी क्या कर रही है, तो वहां विपक्ष के नेता ऐसा गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। शाहिद अली, what does this have to do with Islamophobia? Wouldn't you want to see, one, what is happening in Israel, and two, this is about a war against terror? This is not the war against terror. This is the war against the Palestine by the Israel. You have to understand that. And we salute India that India has also issued a statement that yes, the freedom of Palestine is essential. That has to be seen. If that would have been the position which Mufti is saying or which other persons are saying, then definitely India would not have made this statement that India is standing for the freedom of Palestine. So India has made it very, very clear, candidly, that the freedom of Palestine is of utmost importance. Now, once the India is standing for the freedom of Palestine, now how this war can be linked with Muslims and Yahudi and all? See, this is not the war in between the Muslim and Yahudi. This is the war in between the Israel and the Palestine. Exactly. So Israel who is making the link? want to occupy the Palestine. सर, लिंक तो इल्तिजा मुफ्ती कर रही है ना। Palestinian peoples are fighting. लिंक ना तो सरकार कर रही है, ना तो सो कॉल्ड गोदी मीडिया कर रही है।
लिंक तो इल्तिजा मुफ्ती साहिबा के दिमाग में है, वो क्यों लिंक कर रही हैं? नहीं, अभी यहां पर एक सज्जन ने कहा कि ये यहूदी और मुसलमानों के बीच में वार है, यहीं पर कहा अभी। और जब आप उसकी वार की बात करते हैं तो जुल्मों की बात हमास की करते हैं, तो हमास से लाख गुना ज्यादा जुल्म इससे किया इजराइल ने, उसकी बात क्यों नहीं करते? वहां पर शासक वही भी कही है ना, 800 बच्चों को मार दिया, 1200 औरतों को मार दिया पैलेस्टाइन की। बताइए कितने हमास के लोग मारे? खत्म करिए हमास को। हमने कब मना किया हमास को खत्म करने के लिए? वी आर विद इंडिया। बट जो आप पैलेस्टाइन में जुल्म सितम कर रहे हो, ये मैं बता रहा हूं हलाकू और चंगेज खान से भी ज्यादा खतरनाक वाला जुल्म जो इजराइल कर रहा है। पूरी दुनिया को इजराइल के जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, भारत को भी उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि वो वहां पर पैलेस्टाइनियन को नहीं मार करके बल्कि मुसलमानों को मार रहा है। मीडिया जो ये चीज दिखाना चाहता है, कुछ लोग ये करना चाहते हैं कि साहब वो मुसलमानों को मार रहा है इसलिए हम लोग खुश हैं, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कोई भी खुश नहीं है सर। होल्ड ऑन अ सेकेंड। ऐसा कोई ना मीडिया दिखा रहा है ना दिखाना चाहता है कि वहां मुसलमान मर रहे हैं तो कोई खुश है। ओनली पीपल हु आर हैप्पी इज अगर हमास गेट्स वाइप्ड आउट, पीरियड। This is only about attacking the Hamas. But very quickly, हर्षवर्धन त्रिपाठी, I think आपको वो रेफर कर रहे थे कि जब पैलेस्टाइन वर्सेस जेरूसलम आप बोलते हैं यहूदी वर्सेस मुस्लिम, आप कम्युनल कलर ला रहे हैं। देखिए पद्मजा, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि शाहिद भाई थोड़ा ध्यान से सुनते तो शायद उनको भी आज इस तरह से शर्मसार अभी नहीं होना पड़ता जैसा अभी होना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वहां कोई हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं है, यहूदी मुस्लिम संघर्ष है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए हिंदुओं का वोट लेने के लिए इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। दूसरा मैंने कहा कि अफगानिस्तान, वो भी तो मुसलमान है ना, कि वो आपको मुसलमान नहीं लगते हैं? मुझे लगता है उस सोच से समस्या है जो टेररिज्म के साथ खड़ी होती है। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों से बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, कोई उनको कॉर्नर नहीं करने जा रहा है, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगाने जा रहा है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये देश खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अगर आतंकवाद को टारगेट करने पर आपको लगता है इस्लामोफोबिया है तो सर थोड़ी मुश्किल है। आप खुद को देखिए कहां। हुजैफा, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, जामिया में फॉर एग्जांपल एक रैली निकाली गई जहां पर विद हमास के हेडबैग्स लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। Questions are being raised only about that thought. If somebody in India or anywhere is going to say with Hamas, that is a problem. Only those people will get called out, no one community, and definitely not Indian Muslims. Then what's the problem? Huzaifa. नहीं, अभी ये साहब आतंकवाद की बात कर रहे थे तो इनको इजराइल का आतंकवाद नहीं दिख रहा है। 6 दिन में 6000 बम गिराया इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर, वो आतंकवाद नहीं है। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, वो आतंकवाद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ज्यादा दमनकारी कौन है, ज्यादा जुल्म किसने किए हैं। 50 साल से इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, मासूम बच्चों को मार रहा है, वो आतंकवाद नहीं दिख रहा है। ये आतंकवाद की डेफिनेशन भी रिलीजन देख करके होगी। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अभी कौन साहब बैठे हुए थे, वो बैठ के बोल रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ है। बिल्कुल हर आदमी आतंकवाद के खिलाफ है, मगर यहां पर ये देखिए ना कि ज्यादा जुल्म किसने किया, दमनकारी ज्यादा कौन है। इजराइल के आतंकवाद की बात ही नहीं कर रहे हो आप। आए दिन वहां पर मारे जा रहे हैं बच्चे। हमने यही बात कही है कि ये लड़ाई हम फिलिस्तीन के साथ है, हमने हमास का सपोर्ट तो नहीं किया, हमने फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की बात की। The question being asked is very different. That when there are politicians in India saying that in order to condemn Hamas, anyone who is talking about Hamas is condemning Hamas, is doing it with the ulterior motive of spreading Islamophobia. Do you think that that's a valid argument? What does this have to do with Islamophobia? मुझसे पूछा। हाँ, हुजैफा। नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना कि मीडिया चैनल किस तरीके की हेडलाइन चला रहे हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो स्टेटमेंट आ गया कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि दोनों में पीस डेवलप और इजराइल को एज ए स्टेट कंसीडर किया जाए। वो स्टेटमेंट था, उसको कोई मीडिया चैनल नहीं चला रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर दिया इजराइल में जिस दिन अटैक हुआ, उसको लेकर के पूरे जिस तरह के हेडिंग चलाई जा रही हैं
कि इजराइल के सपोर्ट में नरेंद्र मोदी और तमाम चीजें जो दिखाई जा रही हैं, क्या 50 साल के रिलेशन को खत्म कर देंगे आप फिलिस्तीन के? इंडिया ने उसके सपोर्ट में स्टैंप निकाला, नरेंद्र मोदी ने 3 बार लेटर लिखा इजराइल को। चलाया सर, आप मतलब अगर देख नहीं रहे हैं रेगुलरली तो मैं कुछ कर नहीं सकती, but literally at the beginning of this program also I said that India has given a very stated position that we are in support of Palestine coexisting peacefully next to Israel. That is very different from condemning Hamas. To condemn Hamas is not to condemn Palestine. And to equate the two is the biggest disservice to people of Palestine. India supports Palestine. India does not support Hamas. India wants Hamas wiped out like Israel does. India does not want Palestine wiped out. And to say that is not Islamophobia. I'm out of time. I think it's a fairly simple line of reasoning. Do people not understand it? Is this deliberate obfuscation, or are the two deliberately being linked in order to peddle the agenda that, oh, if you condemn Hamas, if you talk about what Israel is being subjected to, you are whipping up hate against a certain community? No. The only hate being whipped at is against terror and against the Hamas. I think everyone will agree on that. Thanks, gentlemen, for joining.